वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसे यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 8 स्टैटिक्स इन मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो काइजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। एक बार रिकैप कर लेते हैं काइजन के बारे में। काइजन को दिया था मसाकी लमई ने। ठीक है, काई का मतलब होता है चेंज और द एक्शन टू करेक्ट। जेन मतलब होता है गुड्स गुड। ठीक है, आपके फेज क्या क्या होते हैं काइजन में? 5 फेज होते हैं काइजन के, दैट इज एक्सेस, प्लान एंड डिजाइन, इम्प्लीमेंट, इवेल्युएट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्या क्या होता है, एक बार दोबारा बोल लीजिए। एक्सेस, रीएसेस, प्लान एंड डिजाइन, इम्प्लीमेंट, इवेल्युएट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फेजेस, 4 फेजेस होते हैं इसके। सेलेक्ट एन इवेंट, प्लान एन इवेंट, इम्प्लीमेंट एन इवेंट, follow up an event. Select an event, plan an event, implement an event, follow up an event. Kaizen 5S framework है इसके। Elimination of waste and standardization. That is teamwork, self-discipline, improved morale, quality circle and improvement suggestions. 5S in Kaizen: sorting, that is Sri; simplifying, that is Siton; sweeping, that is Siso; standardizing, that is Saiketsu; sustaining, that is Sitsuki. Toyota production system is known for Kaizen. Kaizen help you to constantly change for the better. क्विंग थ्योरी किसने दिया? तो एक के इरलैंग ने दिया। एक के इरलैंग ने क्विंग थ्योरी दिया। कॉमन एरर इन नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, दैट इज लूपिंग. ड्राइंग एन एंडलेस लूप इन अ नेटवर्क इज नोन एज एरर ऑफ लूपिंग. डैंगलिंग क्या है भैया? टू डिस्काउंट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन अ नेटवर्क डायग्राम इज नोन एज डैंगलिंग. SQC, statistical quality control, coined by Walter A. Seward at Bell Laboratories in early 1920s. The 7 quality control tools is flowchart, check sheet, Pareto chart, Swan bar graph, histogram, cause and effect diagram, scatter diagram, control chart. क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पीपल ओरिएंटेड मैनेजमेंट सिस्टम, एडवर्ड डेमिंग, याद रखिएगा नाम इसका। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को किसने दिया? एडवर्ड डेमिंग, जोसेफ एम जुरान एंड आर्मंड वी फेगनबम jointly developed the concept of TQM. Phases of TQM, that is planning phase, doing phase, checking phase, acting phase. Planning phase, doing phase, checking phase, acting phase. Some school of thought view quality as having cost. 4 primary cost categories are appraisal cost, prevention cost, external failure cost, internal failure cost. Another point is benchmarking. The idea behind benchmarking is to measure internal process against an external standard. Benchmarking focus on company to company comparison. Types of benchmarking, that is internal benchmarking, competitive benchmarking, functional benchmarking, generic benchmarking. 6 sigma methodology क्या है? DMAIC is a data driven method used to improve existing products or services for better satisfaction. D for define, M for measure, A for analyze, I for improve and C for control. D for define, M for measure, A for analyze, I for improve and C for control. DMADV is a part of 6 Sigma DFSS process: define, measure, analyze, design, validate. 5 P's of production management is product, plant account, process, program, people. Product, plant account, process, program and people. Regression क्या होता है भैया? Regression analysis is a mathematical measure of the average relationship between 2 or more variables in terms of the original units of data. Term regression was first used in 1877 by Francis Galton. Type of regression analysis is simple and multiple regression. Example:
relation between income and expenditure. Linear and non-linear. Linear regression is one variable change with other in same fixed ratio. Non-linear is one variable varies with other variable in changing ratio. The degree to which the variables are correlated to each other depends on regression line. AM greater than GM greater than HM. Mode is equal to 3 median minus 2 median. याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Mode is equal to 3 median minus 2 median. Measures of dispersion, कैसे मेजर करते हैं डिस्पर्सन को? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बॉली, डिस्पर्सन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम. लोरेंज कर्व इज अ ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग डिप्रेशन. याद रखिएगा लोरेंज कर्व क्या है भैया? तो ग्राफिक मेथड है डिस्पर्सन को स्टडी करने का. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? इट इज ऑफन यूज्ड टू मॉडल द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन इवेंट्स. हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? The hypothesis is an assumption which is tested to check whether the inference drawn from the sample of data stand true for the entire population or not. Hypothesis testing procedure क्या है? Set up hypothesis, set up suitable significance level, determine the critical region, determine the suitable test statistics, perform computation and decision making. There are two hypotheses, that is null hypothesis, H naught. There is no difference between the assumed and actual value of parameter. Alternative hypothesis H1, it stands true if the null hypothesis is rejected. Type 1 and type 2 error. Type 1 error refers to the situation when P reject the null hypothesis. When it is true, H0 is wrongly rejected. Type 2 error, it refers to the situation when B accept the null hypothesis when it is false. Z test किसने दिया? Professor R. Fisher. The Z test is applied to compare sample and population, means to know if there is a significant difference between them. Z test is used when the coefficient is not zero. Location tests are the most familiar to Z test. Z test based on a standard normal distribution. Z test also called as a standard normal deviate test, a standard normal test, approximate test, and large sample test. If the table value greater than calculated value, we accept the null hypothesis. If the table value greater than calculated value, we accept the null hypothesis. If the table value less than calculated value, we reject the null hypothesis. ANOVA क्या है? Analysis of variance is a parametric statistical technique used to compare data sets. Invented by R.F. Fisher in 1920. ANOVA is best applied where more than two population or sample are meant to be compared. Measure of central tendency, arithmetic mean, sum of number divided by n. ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला है भैया, हार्मोनिक का फॉर्मूला है, देख लीजिएगा. मीडियन क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द साइज टू दैट आइटम व्हिच फॉल्स इन द मिडिल ऑफ अ सीरीज अरेंज्ड either in the ascending or descending order. Mode क्या? It is the value of data set which is repeated most often in the database. Measure of dispersion क्या है भैया? Dispersion refer to the variation of item around the an average. According to Bolli, dispersion हम लोग देख चुके हैं. To quote Conor, dispersion is a measure of extent to which the individual items vary. Absolute measure of dispersion are range, quartile deviation, mean deviation, and a standard deviation and variance. Relative measure of dispersion are coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation, coefficient of variation. There is a graph method of studying known as Lorenz curve. ठीक है, Lorenz curve डिस्पर्सन को है. रेंज क्या? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भैया देख लीजिएगा, अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. तो ये था स्टैटिस्टिक्स इन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स. अब जुड़े रहे हमारे साथ.